ये तो खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर 1967 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को पलट दिया है। इस मसले को एक नई संविधान पीठ के पास भेज दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने इस मामले में 4 से 3 के बहुमत से ये निर्णय सुनाया है, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला लिखा है। कोर्ट के फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों, नेताओं और आम लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जहां पर सपा के प्रवक्ता अमीक जोमोई की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देते हुए अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने के अधिकार हैं। यह संविधान की जीत है। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का भी बयान यहां पर सामने आया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आई हैं। The consequent of the court, one was the majority, which was अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है और ये अलीगढ़ तहरीक की, अलीगढ़ आंदोलन की, अलीगढ़ मूवमेंट की फर्जंदाने शख्सियत की जीत है। ये फैसला ये बताता है कि इस मुल्क में मुसलमानों को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उनको अपने तरीके से विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार है, स्कूल बनाने का अधिकार है, उसको चलाने का अधिकार है और हुकूमत की पूरी मदद के साथ जो भी तबके हमारे मुल्क में तालीम में पसमानदगी को झेल रहे हैं, ऐसे इदारों से मेन स्ट्रीम में लाने में हमारे देश में लोगों को मदद मिलती है। We welcome the decision of the Honorable Supreme Court regarding the Alirajpur Muslim University AMU character, and as the court has said, they have overruled its 1967 decision, which held that Alirajpur Muslim University can't claim minority status as it was created by statute. The issue of AMU minority status is now left to be decided by a regular bench for the factual determination whether it was established by a minority or not. As far as the factual and historical facts are concerned, we have more than enough facts to prove that Alirajpur Muslim University was in fact created by the Muslim community for the education of the Muslims by the donation of the Muslim community. So to say that it is not a minority institution. मैं बोल देता हूँ, Okay. Just now, a constitution bench of 7 judges have pronounced their verdict on the issue of the correctness of an earlier judgment, Aziz Basha, which is a judgment from the 1960s, and the consequent minority status of the Alirajpur Muslim University. There were 2 broad views of the court. One was the majority, which was authored by the Chief Justice on his behalf and 3 other honorable judges, and there were 3 dissents. The majority, in effect, that is the court 4:3, has held that the judgment of the 1960s in Aziz Basha, which held that Alirajpur Muslim University is not a minority institution, was incorrect and it has been overruled. Thereafter, it has also set the parameters, or what we legally call indicia, for what is required for an institution to be established by a minority to meet that constitutional test under Article 30. That test basically includes everything in terms of how the institution was established, its history, the community which was involved, and various other aspects. The actual issue of whether AMU is a minority institution will be determined by a smaller bench. But given the nature of the test, which has been espoused by the majority today, it is quite likely that AMU as an institution as it exists is going to meet all those requirements which have been laid down in the test by the court. Honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we will
wait for the next course of action, and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. मैम 3 जज की बेंच को रेफर कर दिया, बोला है कि 3 जज बेंच डिसाइड करेंगी और माइनॉरिटी स्टेटस अभी है या नहीं है, इस पे आप थोड़ा कंफ्यूजन। So you all have heard the decision, so I also have the same decision. So I have nothing to say anything. So there is no comment on that. So we will discuss with our team of legal experts. And मैम सिर्फ ये तो कह सकते हैं कि जो एमयू जो जिस हिसाब से रन कर रहा था वो हमें अभी फिलहाल रन करता रहेगा। हमारे ऐतिहासिक पल है ये, और इस दिन का बहुत दिनों से हम लोगों को सभी को इंतजार था, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और वो बहुत ही सम्मानीय है, और हम बहुत पूरी अलीग बरादरी इस बात का शुक्रिया अदा करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे फेवर में है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हर एक कड़ इसकी एक एक ईंट ये बताती है ये अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। आज हमें मिला है, हम मीडिया का, लोगों का, अलीग बरादरी का, सुप्रीम कोर्ट का, तमाम वकीलों का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खुशी का इजहार किया आपने लड्डू आतिशबाजी। आज ये खुशी के पल पे मिठाई बहुत जरूरी है, और एक दूसरे को मोहब्बत से हम हमेशा एक साथ रखते हैं। और पटाखे तो हमने नहीं फोड़े हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने मिठाइयाँ खिलाई हैं एक दूसरे को, मोहब्बत से एक हमने मैसेज दिया है। आगे जो 3 जजों को जो रेफर किया है उसमें आप क्या मानते हैं? इंशाल्लाह उसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा फेवर हुआ है, और इंशाल्लाह हम लोग अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे। एक रास्ता बना है और बड़े लेवल पे बना है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी इस टाइम। जिस हद तक कहा कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसका हम इस्तकबाल करते हैं। ये अब जिस तरीके से कह दिया अब ये, लेकिन अब यूनिवर्सिटी प्रूफ करे। अब रही बात प्रूफ करने की, तो आप इसकी हिस्ट्री में जाइए, यहाँ की इमारतें देखिए, यहाँ की इमारतें चीख के कहती हैं ये माइनॉरिटी एक इंस्टीट्यूट है। और रही बात प्रूफ करने की, हम वक्त के साथ ये प्रूफ कर देंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ की उम्मीद थी। Well, recently when we see an election is coming up, the BJP starts off with Hindu-Muslim issues. They got a slap in UP where the Supreme Court judgment regarding madrasas which can continue. Now with AMU, they wanted to take away the minority status of AMU. Even in that, the Supreme Court says it has to go to a different bench. Till then, Aligarh Muslim University will have the minority status. So, these are things which the Bharatiya Janata Party brings when there is an election, and the Supreme Court, not the Congress Party, the Supreme Court of India is replying to them. So this shows that there is justice in this country.